Hello everyone and welcome to Vidya Mandir classes. We are doing the KVPY series and let's start with today's session. So आज का हमारा topic of discussion होगा factors affecting photosynthesis. So we had done the C3, C4 cycle, what is photosynthesis and the different cycles which are there in the photosynthesis. ठीक है, और आज हम discuss करेंगे about the factors which affect the process of photosynthesis. इसके बाद we will also discuss the topic of respiration, the different cycles which are necessary for the process of respiration. तो वो भी हम discuss करेंगे and we will do some questions and सबके लिए ये एक information है कि on Thursday you will be having a session of KVPY wherein there will be a solution or discussion of previous year's questions. Okay, so जो भी 2018, 19, 20 के जो KVPY हुआ है तो उसके हम previous year questions discuss करेंगे in our Thursday's class. Okay, तो kindly join that class on Thursday. Okay, तो आज हम शुरू करते हैं with the topic factors affecting photosynthesis. Now, as you all know, photosynthesis जो है it's a chemical process. So ऐसे एक कोई भी chemical process को अगर कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो उसको हम उस पर्टिकुलर फैक्टर को जिसकी वजह से एक मिनिमम वैल्यू आ जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और एनी केमिकल प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर. Okay, that will be called as a limiting factor, the factor which will affect the process of photosynthesis. Now we are talking with respect to photosynthesis, so हम यहाँ पे इसी के context में बात करते हैं. So जो factor, जो कुछ भी factor हो जो photosynthesis के process को कम करता है, okay, उसके minimum value देता है इस process को, तो उसको हम limiting factor बोलते हैं. और ये दिया था by a law of limiting factor by the person called as Blackman. So Blackman gave a law of limiting factor, okay, given by Blackman in the year 1905. Okay, इस year में Blackman ने law of limiting factor दिया था, which says if a chemical reaction is affected by more than one factor, okay, बहुत सारे अगर factors है, then its rate will be determined by the factor to its minimum value. Okay, जो भी factor जिसके कारण एक minimum value मिलेगा उस process को, तो वो उस factor को हम limiting factor बोलते हैं. So that is called as law of limiting factor. Now in the process of photosynthesis there are different factors which will affect this. Okay, so बहुत सारे factors होते हैं जो कि process of photosynthesis को affect करते हैं. कौन कौन से हैं वो? Let's see. Okay, so यहाँ पे intrinsic factors होंगे and extrinsic factors होंगे, or you can say the external factors and the internal factors. अब external factors will be the environmental factor, जैसे कि light हो गया, carbon dioxide हो गया, water होता है, तो these are external factors जो environment में present होते हैं या जो बाहर से आते हैं in the plant. And internal factors which will be the plant factors, जैसे कि orientation of the leaves, sorry, how is the orientation of the leaves, then chlorophyll content and all, so that will be dealt in the internal factors. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें जैसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड,
Okay, carbon dioxide. Then you have temperature and water. So these are the external factors, whereas internal may you have leaf anatomy, chlorophyll content, okay, chlorophyll content, and next is the accumulation of photosynthetic product. Okay, accumulation of photosynthetic products. So these are the different factors. Let's start with the external ones. Okay, external factors. फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे लाइट की बात करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट, सो लाइट इज utmost इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो जो पिगमेंट्स है दे विल नॉट बी एबल टू अब्सॉर्ब दी different wavelength of light and will not get activated. अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बाकी का जो भी प्रोसेस है, मतलब लाइट रिएक्शन वो नहीं हो पाएगा. एंड इफ लाइट रिएक्शन डजंट टेक प्लेस तो ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन डोंट हैपन. सो लाइट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज यहाँ पे तीन चीजें होती है विद रिगार्ड टू लाइट. ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की. Okay, we talk about light intensity. Next is the light duration and the range of light. Okay, light intensity, light duration and range of light. So these three things are important with regard to the light as a factor. सो लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इफ यू इंक्रीज दी लाइट इंटेंसिटी, मतलब अगर धीरे धीरे करके अगर आपने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा इन द स्टार्टिंग, बट लेटर ऑन दैट ग्राफ विल सैचुरेट. ओके, एक सैचुरेट हो जाएगा, दैट ग्राफ विल सैचुरेट and you will get this kind of graph. Okay, ऐसे. This is with regard to the light intensity. So in the starting आपने धीरे धीरे करके लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा इन दी स्टार्टिंग, बट जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट इनफ है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद अगर आपने और भी ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश की तो भी देयर विल बी सैचुरेशन. ओके, क्योंकि एट सम पॉइंट देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. आफ्टर द ऑक्सीडेशन मतलब डैमेज हो जाएगा अगर हमने और लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाने चाहा. तो इस वजह से प्लांट जो है एक काइंड ऑफ सैचुरेशन दिखाता है, जिसके आगे आपको एक कांस्टेंट काइंड ऑफ ग्राफ मिलेगा. सो दैट इज विद रिगार्ड टू द लाइट इंटेंसिटी. नेक्स्ट अगर हम लाइट ड्यूरेशन की बात करें, ओके, लाइट ड्यूरेशन तो ये हार्डली मैटर करता है. लाइट ड्यूरेशन हार्डली मैटर्स इन द डायरेक्टली इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस it will hardly matter directly in the rate of photosynthesis. Okay, hardly matters in the rate of photosynthesis. And the next one is the range of light. ये important है, this is very much important. So two things are important over here. एक तो the light intensity. Okay, light intensity important होती है. Next is the range of light. अब range of light की अगर हम बात करते हैं तो there is a particular wavelength of light which is required by the plants for the process of photosynthesis. So यहाँ पे जो wavelength length की जब बात करें तो it is said to be 400
to 700 nanometers. Okay, 400 to 700 nanometers. That is called as the PAR. Okay, उसको हम PAR बोलते हैं. PAR का मतलब है photosynthetically active radiation. Okay, photosynthetically active radiation. So this particular radiation is very much important for the photosynthesis to take place. So ये हम light के regard में ये बोलेंगे. Next, the factor is carbon dioxide. Now, this is said to be the major. इसको हम major limiting factor बोलते हैं. This is called as the major limiting factor. Why it is called as the major limiting factor? Because if you see in the atmosphere, 0.03% of carbon dioxide is available, which can range up to 0.04%. Okay, 0.03 to 0.04% तक वो increase हो सकता है. But if we increase it, we can only increase to 0.05%. इसके आगे जो है हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, सो इट विल बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट. एक होता है C4 प्लांट और दूसरा होता है C3 प्लांट. तो यहाँ पे दो प्लांट्स है, C3 एंड C4 प्लांट्स हमारे पास. इसमें जो C3 प्लांट होता है, इट इज सेड कि जो C3 प्लांट्स एक काइंड ऑफ सेचुरेशन दिखाएंगे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज सेड टू बी 360. It is said to be 450 microliter per liter. Okay, और C4 plants के लिए it is 360 microliter per liter. तो C3 plants will show a higher saturation 450 और C4 जो है वो lower saturation दिखाते हैं 360 पे. So we can see this with regard to this graph. Okay, C3 and C4. So ये जो C3 है ये यहाँ पे saturation दिखाएंगे 450 पे, यहाँ पे saturation दिखाते हैं. So at higher concentration, okay, ज्यादा concentration of carbon dioxide पे. और जो C4 plants है they will show saturation at a lower concentration of carbon dioxide. So it is said कि जो C3 जो वाले जो प्लांट्स है, C3 प्लांट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा लिमिटिंग होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिमिटिंग फॉर द C3 प्लांट्स. ठीक है, तो ऐसे ही मोस्टली जो क्वेश्चन इस पे आता है वो दे आस्क यू फॉर विच प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग. ओके, सो इट इज फॉर द C3 प्लांट. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट्स क्योंकि इनको ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फॉर द C3 प्लांट्स. एंड दैट्स व्हाई मोस्टली जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाता है बिकॉज ओवर देयर इज हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ट्रैपिंग होती है हीट की. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा रहता है इन द ग्रीन हाउस. नेक्स्ट जो फैक्टर है हम बात करते हैं टेम्परेचर का. Yeah, you will get the notes today itself. या नोट्स आपको आज ही मिलेंगे. क्लास आपकी 9:30 तक होगी. जब तक हमारा टॉपिक हो जाता 9:30 तक हमारी क्लास चलेगी. ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है.
Okay, everyone. ओके, नेक्स्ट हम टेम्परेचर की जो बात करते हैं. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेम्परेचर और एंजाइम्स एंड ऑल, वी टॉक अबाउट सम कार्डिनल पॉइंट्स. ओके, हम तीन कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं. एक होता है मिनिमम, देन यू हैव द ऑप्टिमम एंड यू हैव द मैक्सिमम. ओके, इन तीन की हम बात करते हैं. So with regard to temperature, okay, with regard to temperature, now plants as well as animals, temperature is very much important for both of them. क्योंकि जो enzymes होते हैं, जो processes करते हैं, mostly they are driven by the enzymes, and enzymes जो है they are dependent on the different temperatures. Okay, so उनके जो बॉडी, जो भी प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो एंजाइम है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट the enzyme will work, and on that basis only you will get the rate of that particular process. So rate of photosynthesis is driven by the enzymes, as we have seen the different cycles. Okay, C3 cycle, C4 cycle हमने सब देखा है, और उसमें हमने देखा कि they are driven by the enzymes, and enzymes they will function at a particular optimum temperature only. And from this we can conclude कि जो भी C3 plants होते हैं या C4 plants होते हैं, they require a particular temperature wherein the cycles will work on that particular temperature. So temperature over here is very much important. So जो भी enzymes होते हैं, okay, these enzymes they are basically the proteins. तो enzymes जो है वो proteins ही होते हैं. तो different जो भी C3 plants है, they will have a particular temperature at which the photosynthesis will take place, that is 25 to 35 degree Celsius. ऐसे ही C4 plants हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे, जैसे कि 40 to 55 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसी पे काम करते हैं. एज वेल एज देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रोथर्मल जो अलगे होते हैं, हाइड्रोथर्मल अलगे वगैरह, तो वो किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, 72 to 75 डिग्री सेल्सियस. तो उनका भी अलग सा टेम्परेचर रहेगा. तो उनके जो भी एंजाइम्स रहेंगे दे विल बी एक्टिव एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है वो इसी रेंज में दिखाएंगे. ठीक है. सो जो हमने बात की है यहाँ पे, तीन कार्डिनल पॉइंट्स की बात की है. सो इन द स्टार्टिंग देयर इज मिनिमम टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो एक्टिव नहीं होते हैं. ओके, एट अ सर्टेन पॉइंट इन द मिडल जहाँ पे आपको पिक मिल जाती है, उस पे ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है ऑफ द एंजाइम्स. ओके, तो सारी ये जो ऑप्टिमम जो टॉप मोस्ट जो एक्टिविटी होगी वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है. एंड ओवर हियर देयर इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर. अब मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम जो है वो धीरे धीरे डीनेचर होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली देयर विल बी कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन एंड ऑल, सो डीनेचर हो जाएगा. एंड मिनिमम टेम्परेचर पे जो है एंजाइम जो है वो डीएक्टिव हो जाता है. ओके, इट इज डीएक्टिव एट द मिनिमम. ऑप्टिमम पे वो अटमोस्ट अपना फंक्शन दिखाएगा, और मैक्सिमम पे वो डीनेचर हो जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर विथ रिगार्ड टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज फॉर दी वाटर. अब वाटर एज सच, ओके, वाटर एज सच डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है प्रोसेस को ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इट विल लीड टू सम डिक्रीज इन दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे डिक्रीज करेगा, ड्यू टू वाटर. अगर वाटर
प्लांट में नहीं होगा तो दी लीव्स एंड ऑल विल काइंड ऑफ श्रिंक, ओके, वो मुरझा जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो देयर वोंट बी ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस, एंड इफ देयर इज नो ट्रांसपिरेशन वाटर मूवमेंट विल नॉट टेक प्लेस, मतलब वाटर जो अपलिफ्टिंग होती है वो नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक there will be decrease in the rate of photosynthesis due to water. So water directly does not affect the process. Okay, we can say that it does not directly affect the process of photosynthesis. और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की. ओके, तो इंटरनल फैक्टर फर्स्ट जो है हम लीफ एनाटॉमी की बात करेंगे. नाउ लीफ एनाटॉमी, यहाँ पे हम लीफ एज की बात करते हैं. ओके, व्हाट इज द एज ऑफ द लीफ? इफ इट इज अ यंगर लीफ देन फाइन, ओके, वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. ओल्डर लीव्स और जो लीव्स सीनेसेंस कर रहा है तो वहां पे दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लेस. सो ओल्डर लीफ में लो रेट होता है. ओल्ड लीफ है तो यहाँ पे लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. इफ द लीफ इज यंग और न्यू लीफ देन द रेट विल बी हाई. अच्छा, हाई रेट होता है. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द लीफ एज. नेक्स्ट जो बात करेंगे हम क्लोरोफिल कंटेंट की बात करते हैं. Okay, chlorophyll content. Now chlorophyll content is very much important for photosynthesis. अब ये क्यों? Because chlorophyll is a main pigment which is required, okay, and this pigment only will absorb the different wavelengths. Okay, wavelength of light यही absorb करता है. So if there is no proper orientation or no proper distribution of chlorophyll pigment, ओके, लीफ पे अच्छे से यहाँ अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट और देर इज लेस molecules of chlorophyll pigment, then the rate of photosynthesis will decrease. Okay, there will be lower rate of photosynthesis. The proper distribution of chlorophyll pigment for absorbing more light and increasing photosynthesis is required. Okay, is required. And the last जो factor है that is accumulation of the photosynthetic product. Okay, accumulation of photosynthetic products. अब photosynthetic का product क्या है? As we know, it is the glucose. Okay, photosynthesis का जो product है वो होता है glucose. तो if the plant already has too much of glucose, अगर लीफ में बहुत सारा ग्लूकोज पहले ही फॉर्म होके है, okay, it is stored over there. So why the plant will
produce more glucose. ठीक है, तो अगर accumulation of photosynthetic product, that is glucose, is already present in the leaves or in the plant, then there is no use of photosynthesis process to take place. So इस वजह से जो process है of photosynthesis will decrease. जो rate of photosynthesis जो है वो decrease हो जाएगा, क्योंकि already product जो है वो plant में रहता है. If it is already present, then there won't be formation of more photosynthetic product. Okay, so from all this different factors, it is said कि जो carbon dioxide होता है, that is the main, which carbon dioxide is the main limiting factor which will govern the process of photosynthesis. Okay, so here we are done with the topic of photosynthesis, and we are done with the factors affecting photosynthesis. Let's move to the next topic. Okay, let's move to the next topic, that is respiration. Okay, we are discussing respiration in plants. Now, when we talk about respiration and photosynthesis, अगर photosynthesis हमने पढ़ ही लिया है अभी कि photosynthesis में जो product है, that is the glucose, and in respiration what happens, there is breakdown of this glucose. Okay, so जो भी हम food intake करते हैं, so food will have mainly carbohydrates. So in the respiration we break down this carbohydrates, or we also eat proteins, we also have fat. So there is basically breakdown of the biomolecule, and in the biomolecule there is presence of carbon carbon bonds. Okay, तो हम यहाँ पे respiration में क्या करते हैं, जो भी carbon carbon के bonds है उनको break down करते हैं, and by the breaking of those carbon carbon bonds we will get carbon dioxide, and there will be formation of water. So in the process of respiration, there is just the reverse of photosynthesis. Okay, so in here there is formation of ATP, or there is formation of energy. तो respiration में energy form होता है, photosynthesis में there is use of ATP. So that was an anabolic process, क्योंकि glucose वहां पे form हो रहा था, लेकिन respiration में there is breakdown of glucose, or breakdown of carbohydrates, or breakdown of organic molecules. So this is a catabolic process. Okay, so this is a catabolic process. Now, when we talk about respiration, we talk about breathing. Okay, breathing is a part, you can say, of respiration, because breathing, say, there will be exchange of gases. Okay, and mainly by exchange of gases, we breathe in oxygen, and that is required for the breakdown of glucose. Okay, respiration का मतलब है breakdown of organic biomolecules into simple substances
like carbon dioxide and water and production of energy. Okay, and production of energy. Now यहाँ पे भी we can classify the type respiration into two types. Okay, let's classify it. Types of respiration. Okay, types of respiration, two types here. Now, over here we can differentiate types of respiration on the basis of एक respiratory substrate होता है. अब respiratory substrate क्या है? जो चीज, okay, जो substance respiration में kind of reactant बनेगा. Okay, so that is called as a respiratory substrate. So on basis of respiratory respiratory substrate, we have floating respiration and protoplasmic respiration. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा, दैट सबस्ट्रेट इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट. ओके, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स और इट कैन बी फैट्स ऑल्सो. मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही होता है. और प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है यहाँ पे प्रोटीन्स. Okay, the substrate will be protein. So this is one type of respiration. Another type, if we see, that is on basis of oxygen availability. Okay, on the oxygen availability, you have the aerobic respiration and the anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration and anaerobic respiration. Now from the term itself, aerobic का मतलब है यहाँ पे availability of oxygen होगा. So there is presence of oxygen. Okay, presence of oxygen, and over here there is lack of oxygen. Total lack of oxygen होगा तो anaerobic. अगर presence होगा तो it is aerobic. Okay. In aerobic respiration, what happens? There will be complete oxidation of glucose. Okay, complete oxidation होगा of इसका glucose का to form carbohydrate and water. Okay, so complete oxidation of glucose to form to form carbon dioxide and water. And in anaerobic there will be partial oxidation. Okay, partial oxidation होता है, मतलब half oxidation you can say. Okay, partial oxidation होगा of the glucose. So it will not result in the formation of carbon dioxide in all stages. Okay. Now to study this further, we'll have some pathways. Okay, respiration की certain pathways हैं जो हम देखते हैं. तो first जो है, it is the glycolysis.
Okay, glycolysis, or it is called as the EMP pathway. Glycolysis or the EMP pathway. Now इसको glycolysis या EMP path क्यों बोला है? Glycolysis जो है ये term it comes from a Greek word. Okay, इसका Greek origin है, wherein glycon का मतलब है carbohydrate. Okay, glycon का मतलब है carbohydrate and lysis का मतलब है breakdown. So basically यहाँ पे breakdown होगा of the carbohydrate and mostly the carbohydrate is said to be the glucose. And जो ये second term है that is EMP. Okay, EMP is the abbreviation for the scientist who had discovered this. So उनका नाम है Emden, Meyerhoff and Parnas. Okay, so E for Emden, M for Meyerhoff and P for Parnas. So इसलिए EMP pathway. Now ये जो पूरी cycle जो होती है, okay, this total pathway it happens in 10 steps. Okay, 10 step pathway है ये, and in these 10 steps there are enzymes present. Okay, enzymatic pathway है. Where does it take place? This glycolysis will take place in all the living organisms. So it occurs in all living organisms. All living organisms. Now these organisms can be either prokaryotic or eukaryotic. Okay, कोई भी हो, prokaryotic हो या eukaryotic हो, उसमें होगा. इसके अलावा they can be aerobic और anaerobic. तो एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, तो सब में ये जो साइकिल है ग्लाइकोलिसिस वो रहती है. So this is universal to all the organisms. So there is no need of oxygen for this glycolysis, and it occurs or it occurs in the cytoplasm. So इसका जो site होगा, site of glycolysis is said to be cytoplasm. So it takes place in the cytoplasm. Okay, so let's see this particular cycle. Okay, now 10 steps है, तो इसमें से जो first 5 steps होते हैं, okay, first 5 जो steps है, these are called as the activation phase or they are called as energy consuming phase. ठीक है, एक्टिवेशन फेज और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज. एंड जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स है, नेक्स्ट 5 those are said to be payoff phase or they are called as energy reducing phase. ठीक है, so activation phase or energy consuming phase will be the first 5 steps and the next 5 जो steps है उनको हम payoff phase बोलते हैं, energy producing, क्योंकि in the first 5 the energy is utilized, मतलब ATP use होता है, and in the next 5 steps there will be formation of ATP. So that's why these names are given. So let's
go through this cycle. So हमारा जो first molecule जो glycolysis करेगा, that will be a sugar and it is mostly the glucose, और mostly जो शुगर होगा इट विल बी अ मोनोसैकेराइड एंड इट विल बी ग्लूकोज. ओके, सो ग्लूकोज इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम ग्लूकोज को यहाँ पे लेके चलते हैं. इफ अ बॉडी हैज डिफरेंट शुगर्स, मतलब अगर देयर इज सुक्रोज एंड ऑल, तो सुक्रोज विल बी ब्रोकन डाउन फर्स्ट टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड देन इट विल अंडरगो दिस ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो तब ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो 2 बार चलेगी. अगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो 1 बार चलती है. तो अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज जो है इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज विल डू वंस एंड फ्रक्टोज विल डू सेकेंड टाइम. ठीक है, तो इसलिए 2 बार ग्लाइकोलिसिस चलेगी अगर सुक्रोज है तो. सो कोई भी अगर डाइसैकेराइड है तो इट विल दिस साइकिल विल गो ट्वाइस, एंड अगर मोनोसैकेराइड है तो इट विल कम वंस. So glucose है हमारे पास, तो glucose will get converted into glucose 6 phosphate with the help of the enzyme hexokinase in the presence of ATP. क्योंकि यहाँ पे glucose 6 phosphate, तो यहाँ पे addition of phosphate group है, that phosphate group comes from ATP. So ATP, okay, ATP यहाँ पे change होगा ADP में, and you will get glucose 6 phosphate. Now this glucose 6 phosphate will change into fructose 6 phosphate, which is an isomer of glucose 6 phosphate with the help of phosphoglucoisomerase. Okay, phosphoglucoisomerase. So isomer में change हो जाएगा fructose 6 phosphate. Now fructose 6 phosphate में और एक phosphate group add होता है. So there is utilization of one more ATP and you will get fructose 1,6 bis phosphate. तो यहाँ पे bis का मतलब यहाँ पे 2 phosphate group add up हो गए 1 position and 6 position पे. फिर ये जो fructose 1,6 bisphosphate है, it will convert into glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, glyceraldehyde 3 phosphate में convert हो जाएगा with the help of an enzyme aldolase. अब ये जो है glyceraldehyde 3 phosphate and hydroxy acetone phosphate, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, so they can interchange. Okay, वो interchange हो सकते हैं. But for the next step, we require glyceraldehyde 3 phosphate. This will get oxidized. Okay, glyceraldehyde 3 phosphate जो है वो oxidize हो जाता है into 1,3 bisphosphoglycerate, 1,3 bisphosphoglycerate. So 2NAD plus जो है वो यहाँ पे reduce हो जाएगा. So for the oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3 bisphosphoglyceraldehyde, you require a molecule to be reduced and that is NAD plus. तो यहाँ पे 2 molecule reduce हो जाएंगे to NADH plus 2H plus. अब देखो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड. सो नीड टू बैलेंस दिस. सो ग्लूकोज जो है इट विल ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड. सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होगा, फिर इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, दिस आल्सो 2, this also 2 and this also 2. So जो बाद के जो 5 steps है वहां पे आपको 2 molecules मिलेंगे of each. In the next 2 molecules of 1,3 bisphosphoglyceraldehyde will change into 2 molecules of 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid. Okay, वो change हो जाएगा. So यहाँ पे from this 1,3 bisphosphoglycerate say there is removal of 1 phosphate group, so that will be removed. So you will have a ATP formation. तो ये step याद रखना है सबको. ATP formation है with the help of phosphoglycerokinase. फिर उसके बाद 3-phosphoglycerate will form 2 molecules of 2-phosphoglycerate. Again यहाँ पे just एक kind of shift है of the phosphate group. यहाँ पे पहले 3rd position पे था, यहाँ पे 2nd position पे आ गया. तो there is a mutase enzyme which is acting over here. फिर
2-phosphoglycerate will change into 2-phosphoenol pyruvate. Okay, 2-phosphoglycerate will change into 2-phosphoenol pyruvate with the help of enolase enzyme. एंड यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है. तो ये स्टेप याद रखना है सबको. 2-phosphoenol pyruvate will now change into the final product of glycolysis, which is 2 molecules of pyruvate, जो कि एक final product होता है of glycolysis only. Okay, so glycolysis. So जिन स्टेजेस पे डायरेक्टली एटीपी फॉर्म होता है उसको हम सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation बोलते हैं. Okay, that is called as substrate level phosphorylation directly if when there is formation of ATP. So दोनों ही substrate level phosphorylation है ये दो steps. So if you see, if the total, if you calculate, okay, net gain अगर हम कभी भी calculate करते हैं, net gain of ATP, if we calculate, it is calculated as 2 ATP. क्यों, कैसे? अब देखो, in the first 5 steps यहाँ पे एक ATP यूज हो गया और इधर एक ATP यूज होता है. So 2 ATPs are used over here, and in the second 5 steps 4 ATPs are formed. 2 ATP over here and 2 ATP are formed over here. But this 2 ATPs are again utilized over here. So जो बचता है from whole of this process, जो बचता है, it is only 2 ATP. That's why we say कि from glycolysis we get only 2 ATPs. Okay. तो ATP जो है वो 2 ATP फॉर्म होता है. And इसके अलावा there is also form 2 NADH plus H plus is formed by glycolysis, and 2 molecules of pyruvate. Okay, 2 molecule pyruvate के फॉर्म होते हैं. So this is what we happens from the glycolysis. Okay, हमारा जो end product है from the glycolysis is this much. One more thing, this ये जो enzyme है phosphofructokinase, this is said to be the pacemaker enzyme. Okay, इसको हम pacemaker enzyme बोलते हैं of photosynthesis. Okay, this is called as the pacemaker enzyme क्योंकि जो भी speed होती है of glycolysis, it is governed by this phosphofructokinase, and if the step is hindered by any poisons and all, okay, कोई भी अगर poisons वगैरह आते हैं, toxic substances, then the glycolysis जो pathway है वो नहीं हो पाएगी. So this one is very much important. This particular enzyme is very much important. So that's why it is called as the pacemaker, क्योंकि speed जो है वो control होती है, speed regulation जो है वो इसी से control होती है, phosphofructokinase. So ये याद रखना एक चीज in this. Next, जो अभी ये pyruvate form हुआ है, what happens to the pyruvate which is formed? Okay, so next we will see the fate of pyruvate. अब pyruvate जो है फॉर्म जो हुआ है, it can undergo 2 things. Okay, एक तो in the absence of oxygen, and next thing in the presence of oxygen. Okay, absence of oxygen and presence of oxygen. If there is absence of oxygen, then it will do fermentation, and if there is presence of oxygen, then it will do the aerobic respiration. Okay, aerobic respiration.
फर्मेंटेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन. वन इज अल्कोहलिक, नेक्स्ट दूसरा है लैक्टिक एसिड. सो अल्कोहलिक में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. एंड इन लैक्टिक एसिड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड ही फॉर्म होगा. And दोनों में there will be production of only 2 ATPs which we can see. Okay, fermentation में alcoholic fermentation हो या lactic acid fermentation हो, in both you will have the formation of 2 ATP. Lactic alcoholic fermentation is done by yeast. Okay, yeast करता है fermentation, and lactic acid fermentation is done by lactobacillus. Lactobacillus lacti. Okay, lactobacillus lacti. तो ये करते हैं. So next we are talking about the aerobic respiration. Okay, aerobic respiration. Now aerobic respiration की जब बात करें तो यहाँ पे we have a cycle which is known as the Krebs cycle. Okay, so this is the aerobic pathway which takes place. Okay, and for this pathway to take place, you need to have a first reacting molecule which is there. तो first जो इसका यहाँ पे step होता है, that is formation of acetyl CoA. Okay, acetyl CoA ये फॉर्म होना चाहिए, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन विच विल टेक प्लेस. तो इन दिस स्टेप व्हाट हैपन, जो भी पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है, द पायरुविक एसिड विच इज फॉर्म्ड, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, तो दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो ये स्टेप करेंगे. तो हम फिलहाल तो एक ही मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं. सो पायरुविक एसिड in the presence of an enzyme pyruvate dehydrogenase with the addition of CoA, okay, CoA group, NAD plus is reduced to NADH plus H plus, and कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगा पायरुविक एसिड से, एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA. ओके, सो एसिटाइल CoA जो है इट इज अ 2 कार्बन. सो 3 कार्बन से एक कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, एंड जो हमें जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे that is acetyl CoA. This particular step, ये जो स्टेप होता है इसको हम linking reaction बोलते हैं. Okay, this is called as the linking reaction step of aerobic respiration. So linking reaction, or it is also called as a transition reaction. Okay, so after the formation of acetyl, so glucose या fatty acid जो भी है, they will change into acetyl CoA. तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को लेके चले हैं क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखी है. ओके, एंड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस वी गॉट द पायरुविक एसिड व्हिच वाज फॉर्म. दिस पायरुविक एसिड हैज अंडरगॉन दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज स्टेप, एंड यू गॉट अ लिंकिंग रिएक्शन by the formation of acetyl CoA. So ये फर्स्ट स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप जो है that is the Krebs cycle. Okay,
ये होता है सेकंड स्टेप जो कि है Krebs साइकिल. तो Krebs साइकिल, this cycle was given by Hans Krebs. So this is given by Hans Krebs. Okay, and that's why the name Hans Krebs cycle. Citric acid cycle इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो first product है that is a citric acid. Okay, this cycle is also called as a TCA cycle. Okay, इसको हम TCA cycle भी बोलते हैं, that is tricarboxylic acid cycle, because most of the compound over here which are formed in the Krebs cycle are tricarboxylic acid. So इसलिए इसको tricarboxylic acid cycle भी बोला जाता है. तो when Hans Krebs was studying or was experimenting on the flight muscle, ओके, फ्लाइट मसल्स पे जब काम कर रहा था ऑफ पिजन, उस टाइम पे इन्होंने ये पर्टिकुलर Krebs साइकिल नोटिस की थी. नाउ इन दिस Krebs साइकिल व्हाट हैपेंस, जो हमारा एसिटाइल कोए है, it will react with oxaloacetic acid and produce citrate. Okay, with the help of the enzyme citrate synthase enzyme आपको citric acid produce मिलेगा. Here there is water का involvement है, inward and outward movement of water will be there. A conitase enzyme होगा and you will get isocitrate. This isocitrate undergoes with the help of isocitrate dehydrogenase आपको alpha ketogluteric acid मिलेगा. Okay, where there is removal of one carbon dioxide molecule. Also there is formation of NADH. तो यहाँ पे एक reduction हो रहा है, NAD का reduction होगा. So, अगर NAD रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, so this is a redox reaction which is taking place. Then alpha ketoglutarate is changing into or converting into succinyl coenzyme A. Okay, succinyl coenzyme A में convert होगा with the help of the enzyme alpha ketogluteric dehydrogenase. एक complex है ये. So NAD is getting reduced to NADH. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हुए. सो इन द टोटल Krebs साइकिल, ओके, फ्रॉम एसिटाइल कोए टिल दी लास्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वापस से फॉर्म जब होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं इन द Krebs साइकिल एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड हैज रिलीज इन द लिंकिंग रिएक्शन. ठीक है, सो फ्रॉम 1 pyruvic acid you have 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड. फिर succinyl coenzyme, it will convert and give you succinate. This will convert and give you fumarate. Fumarate से malate and malate से oxaloacetic acid. With the help of enzymes, okay, सारे enzymes यहाँ पे intermediate enzymes है. Also you need to know, you need to remember this step. ये यहाँ पे देखो GDP, GTP. Okay, this is a substrate level phosphorylation. ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप है यहाँ पे, जहां आपको देर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP. सो इन दी स्टार्टिंग देर इज फॉर्मेशन ऑफ अ GTP. दैट GTP विल गिव इट्स एनर्जी टू ADP एंड कन्वर्ट इट इनटू ATP. तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगा. सो इन होल ऑफ दिस यू हैव ओनली 1 ATP which is formed from 1 pyruvic acid getting oxidized. Okay, so एक pyruvic acid getting oxidized, you will get only 1 ATP formed. So there is a need of more and more ATP production. तो उसके लिए another thing will happen, okay, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो that is a mechanism wherein there will be production of ATP. एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं मोबाइल कैरियर्स से, दे विल मूव फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर कैरियर एंड लास्टली दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल दे आर मूविंग दे विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू अ प्रोटॉन. Okay, so proton generate होंगे, that proton will be flux to the ATP synthase complex which will help in the formation of ATP. So at the last you will get ATP. So वो होता है electron transport system and oxidative phosphorylation. तो हमारा जो
टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक समराइज करते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द आउटकम। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है। Okay, so outcome, if you see, we are talking about only one pyruvic acid, okay, but दो pyruvic acid form होते हैं ना, तो आप उसको calculate करो into 2. So one pyruvic acid plus what is in quota, हम 4 NAD plus involve होते हैं plus 1 FAD plus sorry FAD होता है, you see over here एक FAD, ओके एक FAD है, कहाँ है वो, इधर है। ओके यहाँ पे NAD है, यहाँ NAD है और यहाँ पे NAD है और इधर में NAD था। तो 1 2 3 4 1 2 3 and this is the fourth one and this is the first one, ठीक है। तो ये देखो 4 NAD plus 1 FAD, then 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, 1 ADP जाता है, and when these things reacts it will result in 3 carbon dioxide formation plus 4 NAD plus 4H plus 1 FADH2 plus 1 water plus 1 ATP, ठीक है। ये है the final outcome of photosynthesis for one molecule of pyruvic acid, okay, so that is half glucose के लिए। Next is electron transport system, is the ETS, and oxidative phosphorylation, okay, electron transport system and oxidative phosphorylation। So this figure will give you the electron transport chain होता है, ओके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है विच विल वर्क टुगेदर and result in the production of protons, okay। इसको और अच्छे ये वाला सही, ये वाला देखो, okay। So in here you can see this is the mitochondria, okay। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो TCA साइकिल है, TCA साइकिल जो है वो कहाँ होती है, इन दी मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स में TCA साइकिल होगा एंड उससे रिलीज होंगे NADH FADH2, ये सारे रिड्यूसिंग पावर्स जो है दे आर रिलीज इन द मैट्रिक्स। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, this is the outer membrane
and this is the perimitochondrial space. ठीक है, सो ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में ये जो स्पेस है, दिस इज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. Okay, so these things are important with regard to the electron transport system and oxidative phosphorylation. अब इसमें different complexes हैं. There are 4 complexes of the electron transport system, and one is that complex is complex 5, which is an oxidative phosphorylation complex. So 1, 2, 3 and 4, ये जो 4 complexes है, it is of the electron transport chain. ओके ये एक चेन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ये कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3, 4 है, और ये जो एटीपी सिंथेज वाला जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थिंग. ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा. So what happens? तो हमारे यहाँ पे जो भी complexes है, it has the presence of some enzymes. ठीक है, so जो पहला वाला है, it has the presence of an enzyme that is NADH ubiquinone oxidoreductase. यहाँ पे एक enzyme रहता है इसके अंदर. Okay, this is the first complex, which is NADH ubiquinone and oxidoreductase complex. Okay. So what it does, it will oxidize this NADH जो है वो oxidize होके it changes to NAD, and when it oxidizes there is removal of electrons. तो यहाँ से electrons जो है वो pass हो जाएंगे. Electrons passes from here. Okay, electrons जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एंड दे आर टेकन अप बाय दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, द कॉम्प्लेक्स हैज सम प्रोटीन्स इन इट, जैसे कि FMN प्रोटीन रहता है, FES प्रोटीन्स रहते हैं, तो इसमें FMN एंड FES प्रोटीन रहता है. सो दे विल टेक दिस NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दे विल बी टेकन अप बाय दोज इलेक्ट्रॉन मोबाइल proteins. Okay, so electron mobile proteins will take those electrons, and जैसे electron pass out होते हैं, the protons which are there in the matrix, they are fluxed outside. Okay, so यहाँ से protons release हो जाते हैं in the perimitochondrial spaces. From the matrix they will go into the perimitochondrial space. Electrons from the complex 1 is taken up by another mobile electron carrier, which is ubiquinone. It gets reduced, okay, and it passes its electron to the complex 3. यहाँ पे first से electrons directly complex 3 तक जाएगा. Complex 2 is not taking part when NADH is getting oxidized. Okay, जब NADH जो है वो जब oxidize होगा, उस टाइम पे complex 2 is not taking its role. Okay, तो वो complex 2 is not involved when it is NADH. Complex 2 will only come in when it is FADH2. ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलहाल तो NADH की बात कर रहे हैं. So NADH से electrons जो है, it will be taken up by the complex 1. The complex 1 will pass its electrons to ubiquinone. Ubiquinone release यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा जब उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एंड फिर वो ऑक्सीडाइज होगा. व्हेन इट ऑक्सीडाइजेस मतलब इट विल रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 3 में देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम बी. ओके, यहाँ पे साइटोक्रोम बी है, FES है, साइटोक्रोम C1 है. सो देयर इज साइटोक्रोम बी, FES है, एंड साइटोक्रोम C1 है. तो एक इलेक्ट्रॉन विल पास टू साइटोक्रोम B, then it will go to FES, then it will go to cytochrome C1. C1 से इलेक्ट्रॉन will pass to the cytochrome C. Okay, C1 से C तक जाएगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आगे, तो प्रोटॉन्स विल पास फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस.
तो कितने प्रोटॉन्स पास होंगे? तो फर्स्ट केस में 4 प्रोटॉन्स पास होंगे, सेकेंड केस में 4 प्रोटॉन्स पास होंगे, थर्ड केस में क्या होगा? अब electrons from cytochrome C1 will be taken up by the cytochrome C complex and be given to the fourth complex. Okay, जो fourth complex है उसको दिया जाएगा. Now in the fourth complex there is cytochrome AA3. AA3 oxidoreductase रहता है. Okay, cytochrome AA3 oxidase enzyme रहता है, which will take the electrons, ये electrons लेता है कहां से? साइटोक्रोम सी से लेगा, and gives to the terminal electron acceptor which is oxygen. तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन लेता है. In the matrix there is also protons, so protons ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा and there is formation of water. So in the electron transport chain there will be formation of water, and during this now only 2 protons will get pumped into the perimitochondrial space. So एक molecule of NADH when it gets oxidized through this electron transport system, it pumps 10 protons in the perimitochondrial space. वैसे ही जब हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, that is FeDH2, FeDH2 will get oxidized. When it gets oxidized, electrons release होंगे यहाँ पे. Those electrons will be taken by ubiquinone. This ubiquinone passes to third complex. Third complex से protons यहाँ पे release होंगे. Okay. In the perimitochondrial 4 protons release होते हैं. Then electrons will go to the cytochrome C. Then cytochrome AA3 will take up the electrons. Then in the last, oxygen will take up the electrons. And when it take up the electron, 4 यहाँ पे 2 protons pass होंगे. So one FeDH2 molecule passes 6 protons. Okay, 6 protons in the perimitochondrial space. So see the reference. When NADH is there, उस टाइम पे 10 protons पास होते हैं. जब FeDH2 है तो उस टाइम पे 6 protons ही पास होते हैं. ठीक है, in the perimitochondrial space. Now in the perimitochondrial space there will be a gradient which will be created of protons. तो बहुत सारे protons यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, accumulate हो जाएंगे. Now these protons will, तो जो भी protons अब यहाँ पे हैं, these protons will get passed to this complex. This complex is ATP synthase complex. It has an enzyme that is ATP synthase. Okay, ATP synthase complex रहता है. That is F0 F1 particle है ये, F0 F1 particle. जब 4 protons जाएंगे इस complex के through, उस टाइम पे एक ATP फॉर्म होगा. Okay, that is called as the oxidative phosphorylation. So when we calculate these, we can see from electron transport system, 1 NADH plus H plus oxidized जब होता है तो उस टाइम पे 10 protons फॉर्म होते हैं, और एक FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो उस टाइम पे 6 protons फॉर्म होते हैं. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन of 1 ATP, there is requirement of 4 protons. Okay, 4 protons required होते हैं. So from this thing, okay, हम calculate कर सकते हैं कि एक NADH plus H plus will form 2.5 ATP, that is approximately taken as 3 ATPs, and 1 FADH2 will form around 1.5 ATP, which is approximately taken as 2 ATP. ठीक है, so this will be the production of ATP by the electron transport system and oxidative phosphorylation. Okay, so जब तक electron transport system नहीं होगा, उसके अलावा मतलब if electron transport system doesn't take place, then
ATP synthesis will not happen. Okay. And from this calculation, we can calculate the respiratory balance sheet. ओके, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे? लाइक ग्लाइकोलिसिस एक होता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है. दूसरा है लिंकिंग रिएक्शन, जब पायरुविक से एसिटाइल कोए बनेगा. ओके, दैट इज द लिंक रिएक्शन. एंड यू हैव द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं. फ्रॉम दिस ग्लाइकोलिसिस डायरेक्टली कितने एटीपी बनते हैं? टोटल एटीपी कितना बनता है? डायरेक्टली यू हैव 2 एटीपीज फ्रॉम दी ग्लाइकोलिसिस. डायरेक्टली मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी बनते हैं. एंड देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH प्लस 2H प्लस. तो इससे कितने बनेंगे? 6 एटीपी बनेंगे. एक से 1 NADH gives you 3 ATP. ठीक है, सो 2 आपको 6 ATP देगा. नेक्स्ट हम पायरुवेट से एसिटाइल कोए से उस टाइम पे 2 NADH प्लस H प्लस बन रहा है, तो आपको वापस से 6 ATP बनेंगे. एंड क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 NADH प्लस H प्लस होगा प्लस 2 FADH2 होगा. ओके, एंड डायरेक्ट डेरिव फॉर्मेशन. सो 6 मतलब 18 ATPs यहाँ पे बनते हैं. 1 FADH2 will give you 2 ATP. तो 2 से 4 ATP बनेंगे. एंड डायरेक्टली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP. सो इसका टोटल जो काउंट मिलता है, ओके, टोटल जो एटीपी काउंट है बाय द 3 प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, तो उसका टोटल जो मिलेगा आपको 38 एटीपी मिल जाता है. तो सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें आपको 38 एटीपी फॉर्म मिलेगा. यूकैरियोट्स में क्या होता है? थोड़े सेल्स जो है वो 38 एटीपीज बनाते हैं. थोड़े सेल्स में देयर इज लॉस ऑफ सम एटीपी एंड दे प्रोड्यूस 36. ओके, सो यूकैरियोट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स जो है वो 38 एटीपीज बनाएंगे अगर उनमें ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल हो रहा है तो, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो. ठीक है, So today we have discussed the factors which are affecting photosynthesis process and respiration. Okay, respiration के हमने चीजें discuss की है. That is what is respiration, then what are the types of respiration which are there. We have also discussed glycolysis, link reaction and the Krebs cycle. Okay, तो Krebs cycle उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखा, which will help in the formation of ATP synthesis and water production. So इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या जनरेट होता है? प्रोटॉन जनरेट होता है. वही प्रोटॉन्स आगे जाके हमें ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ओके, सो तो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ मेटाबॉलिक पाथवे होती है through which the electrons passes from one carrier to another and is finally accepted by a terminal acceptor which is oxygen to form water. Okay, so terminal कभी question आ सकता है. Okay, there can be a question asked. Terminal acceptor of electrons in ETS. Okay, terminal acceptor of electrons in ETS. Options: oxygen, water, C is cytochrome C, and D is cytochrome
A3. Terminal acceptor of electrons in ETS is said to be ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन. द टर्मिनल डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आया तो इट विल बी साइटोक्रोम A3. so that will be the donor of electron, मतलब last में इलेक्ट्रॉन. or if the question is asked terminal electron carrier, okay, terminal electron carrier in ETS, then it is cytochrome AA3. that is the terminal, मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो AA3. एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, which is at the terminal, मतलब लास्ट में ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर KVPY. ठीक है. And don't forget, you on Thursday you will have a KVPY class in which sir will be discussing some previous year questions. Okay, 2018, 19, 20 उसमें जो भी बायो के क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस होंगे. So don't miss it, don't miss that class. And thank you everyone. I'm ending my session over here. Let's meet in the next class, next session. Okay, see you there. Bye bye everyone.